पाकिस्तान के अंदर ना लोग बहुत जुगाड़ी हैं, एज इन कस्टमर्स भी और वर्कशॉप्स वाले भी। जब आप एक पार्ट चेंज कराते हैं आपको पता नहीं होता कि वो क्वालिटी कौन सी है। चाइना, जापान, काबुली या चोरी का। So why would any workshop get involved in that? पैसे कमा के देंगे आप किसी को तो आपकी बात, आप जो भी बात बोलेंगे वो मानेगा। What is a woman doing in this space? So I found the problem very interesting, very relatable. वो सवाल पूछने की जो आदत है ना वो बड़ी ज़रूरी है। Hello and welcome everyone to DigiTales. My name is Faizan Saeed, founder and CEO of East River. And before I tell you who I have today here, subscribe the channel below if you like our content, if you've been watching the content, because when you subscribe, we're able to send you notifications every time there is new content. और मैं चाहता हूँ कि आपको फौरन notification मिले जब नया content आए. Today I have two co-founders with me who will talk about a subject and a business that I'm extremely passionate about. And what's unique कि ये business एक male dominated business है and one of the co-founders is a woman. तो ये एक पूरी story जो है I think you'll get to learn about. If you're interested in starting a business, if you're interested in startups, and if you're interested in anything to do with cars, this is the episode to watch. We have Nasheet Naviwala and Anusha Shahid. And this is also our first episode with two guests at the same time. So welcome. Thank you. Thank you for inviting us, sir. You guys have started a business by the name of OK Kar. Yes. ठीक है, और ये business का primary purpose है कि from what I understand, you're solving a problem कि लोगों को अच्छे mechanics नहीं मिलते और घर पे गाड़ियाँ उनको let's say repair करनी होती हैं. So you're trying to combine that and solve that. Tell us a little about that. So पहले मैं ये इंडस्ट्री का थोड़ा ना स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है इन पाकिस्तान. So there are more than 800 types of cars that are driven on the roads in Karachi right now. Each car has around 30,000 components and 1,000 different parts that go into it. So when you put permutation combinations with it, there are more than 10 million SUs that are available. और उसके अगेंस्ट there is no digital repository available. The best bet is कि अगर आप बहुत अच्छे वर्कशॉप से चले जाएं तो आपको ब्रांड की कैटलॉग्स मिलेंगी बट यू वोंट गेट द कैटलॉग अकॉर्डिंग टू द कार. और क्योंकि वो वर्कशॉप के मैकेनिक का एक्सपीरियंस होता है तो वो पेजेस घुमा घुमा के कंफर्म करता है कि एग्जैक्टली पार्ट क्या लगाना है. तो एक बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि अगर मैकेनिक को भी नहीं पता तो कस्टमर को भी कैसे पता होगा. देन देयर इज प्रेवलेंट फ्रॉड इन द मार्केट एज वेल. देन इट्स पीपल लाइक यू एंड मी हु जनरली ओन अ कार एंड यूज इट फॉर कम्यूट, राइट. अगर मुझे गाड़ी रिपेयर करानी है राइट नाउ तो या तो मैं अपने ऑफिस के प्रोडक्टिव टाइम में से वो टाइम निकाल के जाऊँ रिपेयर करवाने के लिए, या फिर मैं शाम को ऑफिस से निकलते हुए या फिर ऑफिस से मैं जल्दी ऑफिस के लिए जल्दी निकल के वो वाला काम करवाऊँ. देयर इज़ नो अदर पॉसिबिलिटी. या तो मैं संडे को या सैटरडे को मार्केट के अंदर जाके बैठूँ और मैं ये काम करवाऊँ. और संडे भी अगेन लाइक ओनली 60% वर्कशॉप्स ऑपरेट इन पाकिस्तान, वरना वो भी बंद होते हैं संडे को. सो देयर इज़ अ वेरी बिग बिहेवियर मिसअलाइनमेंट एज वेल वर्कशॉप्स और कस्टमर्स की एंड पे इस तरीके से. उसके साथ साथ और ऑथराइज्ड डीलर नेटवर्क पे और लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो एक्सपेंसिव होता है. लोनर कार्स का कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे कि आपने गाड़ी डीलर को दी, आपने लोनर कार ली, तो यहाँ पे तो वो चलता ही नहीं है. और यहाँ पर एक और भी चीज़ होती है कि आप पाकिस्तान के अंदर ना लोग बहुत जुगाड़ी हैं, एज इन कस्टमर्स भी और वर्कशॉप्स वाले भी. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. होंडा सिटी के अंदर जो है ना वो सुजुकी ऑल्टो का ब्रेक पैड लग सकता है अगर उसकी डिस्क में एक एक्स्ट्रा खड्डा हो जाए. सुजुकी ऑल्टो का ब्रेक पैड है 1800 रुपये का, होंडा सिटी का ब्रेक पैड 3100 रुपये का. कस्टमर वो 1300 रुपये बचाने के चक्कर में वो एक्स्ट्रा होल करवा देता है. अब वो नेक्स्ट टाइम उस वर्कशॉप पे नहीं गया, किसी और वर्कशॉप पे गया, उस वाले वर्कशॉप वाले को समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है. वो फिर पूरी 8000 रुपये की डिस्क चेंज करेगा. सो you're trying to solve this whole problem जहाँ पे पार्ट्स की रिपोजिटरी नहीं है, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क डिलीवर किया जाए और ऐसे वक्त पे किया जाए जहाँ आपका वक्त बच रहा हो. सो फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हैं, वो आपके ऑफिस आके गाड़ी फिक्स कर सकें. एंड वी आल्सो टेक दिस एज अ वेरी मेडिकल या हेल्थ केयर वाले अप्रोच के उसमें कि इन फॉर एवरी हॉस्पिटल दैट यू गो यू गेट एन MR नंबर, राइट. मेडिकल रिकॉर्ड नंबर होता है. आप अगर 3 years डीलरशिप पे जाओगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती है. आप नॉर्मल रोड साइड वर्कशॉप पे जाओ, आपके पास एक पर्चा आता है और पर्चा भी आपने नेक्स्ट टाइम कहीं छोड़ दिया तो आपको नहीं पता लास्ट टाइम मैंने गाड़ी में इंजन ऑयल 5W30 डाला था, 0W20 डाला था, 10W30 डाला था. सो अगर आप गलत ऑयल डाल देते तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी की इंजन की लाइफ ख़राब होती है. वॉट वी डू इज़ के ऑल ऑफ आवर डेटा इज़ रिकॉर्डेड इनटू अ सिंगल सिस्टम एंड वी ऑल्सो यूज दिस डेटा
and give it to the workshops ताकि वो अपने पुराने customers को reactivate कर सकें जो कि वो अभी बिल्कुल नहीं कर सकते. That system also has multiple payment gateway solutions ताकि वो credit card से payment accept कर सकें, वो easy पैसा से payment accept कर सकें. There is a whole digital repository of spare parts, and I believe we are the biggest digital repository of spare parts in Pakistan right now because we have registered more than 30,000 SKUs. So even if you go to our app right now, the prices might not be updated on live basis. They are updated जब demand आती है. लेकिन you can order that part from us and we'll quote you that part rate within 3 hours. So, as I understand it, the end user, the target audience for this is someone who wants to save time, not money necessarily. Because you're going to do the right thing, which might cost more. But we also, but there's also a safety net for money. Because we are the only service providers in Pakistan that actually provides a warranty. So, अगर मैं लेकिन पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ना? Not necessarily. Because so जो black box होता है ना for any car owner जिसको गाड़ियों के बारे में नहीं पता, हम वो ब्लैक बॉक्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिस्ट्री कम कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल जब आप एक पार्ट चेंज कराते हैं आपको पता नहीं होता कि वो क्वालिटी कौन सी है. वो आपको सस्ता पार्ट भी ताइवान, चाइना, जापान, काबुली या चोरी का. बिल्कुल. एंड द रेट्स वेरी फ्रॉम लाइक लेट्स से 100 रुपीज़ ऑल द वे टू 1000 रुपीज़. इतना गैप होता है. सो वो कौन सी प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सा पार्ट मिल रहा है वो एक मिस्ट्री है आपके लिए. तो you're listing your prices on your app by saying कि ये काबुली है. Exactly. हाँ ये चोरी का. हम कॉपी बोल के बेचते हैं. So अगर आप मुझसे बोलेंगे मुझे लेट्स से 500 रुपये का फिल्टर चाहिए जो असल में 2000 का होता है तो आपको बता देंगे कि ये फर्स्ट कॉपी है इसकी और इसकी ये प्राइस है. ये बताएंगे आपकी फर्स्ट कॉपी यूज करने से नुकसानात ये भी बताएंगे. बट दिस इज द प्राइस पॉइंट यू वांटेड तो इस पे ये चीज़ मिल रही है और अगर आपको कोई और दे रहा है तो वो दे यही चीज़ रहा. बट इज इट दिस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड फॉर अ कस्टमर हु डजंट केयर, दे जस्ट वांट दैट कार टू वर्क. तो नो वन केयर्स कि यार आप पहले ये होता था. मैं एग्री करता हूँ जब $5,000-10,000 की वैल्यू होती थी एसेट की. अब जो गाड़ी ओन करता है ना पाकिस्तान में देयर आर ऑलमोस्ट 3.6 मिलियन कार ओनर्स हु ओन्स 7.5 मिलियन कार्स. सही है. तो roughly two cars a person. सही है. तो और अगर आप ओवरऑल इसको देखो तो 1 out of every 330 people have actually can commute via car. सही out of the total population. सही है. और ये नंबर्स बहुत बुरे हैं उस सेंस में. तो जिसके पास वो एसेट है ना वो पढ़ा लिखा है, उसकी कम से कम तनख्वाह 50,000 रुपये है ताकि वो अफोर्ड कर सके वो चीज़. सही है. अब उसको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि यार कि अगर मैं आज इसकी केयर नहीं करूँगा तो वो मुझे चीज़ रिप्लेस जल्दी करनी है. और गाड़ियों की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं. अभी एवरेज यहाँ पे डेटा है दैट शोज के एवरेज लाइफ ऑफ अ व्हीकल पाकिस्तान में क्या है. So it has gone up. So according to our research, say there is no proper data and proper research onto it. लेकिन हम लोगों ने अपने जितनी estimates करने की कोशिश करी है. The average life of a car in Pakistan went down when Careem was growing and Uber was growing. ज़ाहिर है वो नई fleets. JDM imports Mira, Nissan Days, Rooks, Alto, Wagon R, इतनी किस्म की गाड़ियाँ आ गई हैं. सही है कि जो कि आपके 15-16 लाख रुपए की कॉस्ट करती थी और वो सबसे अच्छी ROI आपको निकाल के देती थी एट करीम. लेकिन वो भी तो 3 साल पुरानी थी ना. वो भी 3 साल पुरानी थी. तो अब इंजन असेंबली चेंज हो जाती है उन्हीं गाड़ियों की. तो एवरेज लाइफ ऑफ अ कार यहाँ पे कितनी, इंक्लूडिंग वो जो वक्त जापान में गुजारा है, तो पाकिस्तान की एवरेज कार लाइफ एज क्या होगी? एवरेज लाइफ जो वो पाकिस्तान के अंदर वो गाड़ी रहती है इट्स अप्रोक्सीमेटली 14 years. US का स्टैट मैं देख रहा था आज, 10.something it's 10.2 years and it's actually the highest it's ever been in North America. Yep. बिल्कुल. This was because of the COVID. That was because of COVID, and now it's going to persist because interest rates have gone up to 7%. And also they have a वो वाला mindset भी है ना कि यार के towards green energy move करना है. So again, that's a very small percentage of the total vehicle sales. Yeah, I know. It's less than 1 million units a year in a seasonally adjusted rate of about 20 million cars every year that they sell. But there is a hike in taxes in some states in America because if it's a diesel or a petrol engine car. सही है. If it's a hybrid car or e-vehicle, then वो taxes नहीं है तो उसकी वजह से भी एक shift आया. और जितनी भी hybrid और e-vehicles हैं, those are generally expensive. But still a small percentage. Yeah. Very small. Yeah. Coming back to this, so you're saying कि पाकिस्तान में according to your data, average car age is 14 years. I would say it's a little higher, average car age. I would put it closer to about average age. I'd put it at about closer to 20. This is just my assumption. In that, repair and maintenance become a big part of it. Yep. ठीक है. Repair maintenance जो एक पूरा black box है. किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन क्या किस तरह कर रहा है. Labor rates की कोई standardized labor नहीं है. और parts is also another mystery क्योंकि multiple types के parts होते हैं और किसी को पता नहीं होता कि कौन सा part actually लगा है और पैसे किस चीज़ के लिए गए.
ये तमाम प्रॉब्लम प्लस सैटरडेज संडेज बर्न करने पड़ते हैं, आपको ऑफिस आवर्स बर्न करने पड़ते हैं, और जहाँ पे आप जाते हैं गाड़ी ठीक कराने वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, तो मतलब दैट इज़ नॉट अ ग्रेट और एक्सपीरियंस। जहाँ पे बैठने की जगह है वहाँ पे पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। वहाँ पैसे ज़्यादा चार्ज होते तो हैं। हम इसीलिए कस्टमर को बोलते हैं यार हम लोग आपको बैठने की जगह नहीं देंगे, आप घर पे बैठो एसी में। तो ये सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। Yep. ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉल्व करने के लिए आपके पास एक कोई ऐप, कोई वेबसाइट होगी that you're probably reaching out to people through? Yeah, so I will. So the way we are solving this problem is that we are basically bridging the gap between the consumer, जो vehicle owner है वो, and जो existing workshops हैं पाकिस्तान में उनके लिए, because in the last 30-40 years, बल्कि जब से गाड़ियाँ पाकिस्तान में पॉपुलर हुई हैं, जो वर्कशॉप्स के काम करने का तरीका है उनमें कोई अपग्रेड नहीं आई हुई है। सो यू विल सी अपग्रेड इन अदर सेक्टर्स, बट जो इस वाले सेक्टर में वो अभी भी पेन पेपर पे ही काम कर रहे होते हैं, बल्कि पेन पेपर भी वो मुश्किल काम कर रहे होते हैं। अगर आपको मैक्स जो मिलेगा वो एक सफ़ेद कागज़ पे 5,000 रुपये लिख कर और ऊपर कुछ स्क्रिबल हुआ पता चल जाएगा कि ये इतने पैसे आपको देने हैं, उसमें हुआ क्या है उनको भी नहीं पता। सो वो हम गैप ब्रिज कर रहे हैं थ्रू एन ERP दैट वी बिल्ड। Initially we had built it to sort of cater to our own needs, but we realized that this is something that we can actually implement at the workshops. वो एक learning का टाइम आएगा, बट वो सीख जाएंगे उसको यूज़ करना, उसको इतना सिंप्लीफाई करके। क्या फ़ायदा है उनके सीखने का? I have a workshop and the reason I ask it is because वो मेरा एक passion project है। I got an ERP. It was not very expensive. It was maybe $70-80 a month. एक Australian ERP मैंने ढूंढा और बैठ के मैंने implement किया, और I did it forcefully क्योंकि मुझे I wanted a log of whatever vehicles come through it. उसकी knowledge and uptake करवाना to the team was like pulling my hair out of my head. That's probably why I lost half my hair, because getting them to implement that was a distraction from them doing great work. Exactly. Yeah. So why would any workshop get involved in that? That is not a 3S dealer workshop. So I'll explain you why. So nothing in Pakistan happens without you actually having a monetary incentive associated. A danda. Not just a डंडा, but a monetary। डंडे से तो खैर बिल्कुल भी काम ये वाले नहीं हो सकते। हम पैसे कमा के देंगे आप किसी को तो वो आपकी बात, आप जो भी बात बोलेंगे वो मानेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली द अप्रोच। तो you're saying कि ERP के थ्रू हम उनको ऑर्डर्स दे रहे होते हैं। सो we're essentially a marketplace that is connecting the consumer with that workshop, और उस वर्कशॉप के पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि उसका जो पुराना कस्टमर था जिसके पास काम करवा के गया है वो उसको रीएक्टिवेट कर सके। So it's like getting a ride for Uber or Careem. Exactly. So you're a collector of the rides and then that ride is distributed जो उठाना चाहे उस ऑर्डर को, और उसके बाद उसको दोबारा बुलाना और फिर दोबारा बुलाना, क्योंकि ये तो पीरियोडिक काम है ना। So it's not just an ERP then. It's a CRM as well. It's a CRM as well. And it has Right. payment gateways integrated into as well. So how many workshops do you have today on enrolled into this? So we have in Karachi alone, we have 7 full service workshops and around 20-25 specialized workshops. What's a And, specialized workshop? So special, I would like Nashid to explain this. So specialized workshops यार इस तरीके से होते हैं कि a car spa is a specialized workshop क्योंकि they don't do mechanical or electrical jobs. So a detailing center, a wrap center. सही है। उसके अलावा जो चोरी का सामान है, जो पैनल्स वगैरह बिकते हैं, That's very a specialized thing. So है ना, क्योंकि It's a unique skill set. यार अब हम जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं एक चीज है। Why तो would आप you कुछ कर enlist सकते हैं। that? मतलब you're in its way promoting कि चोरी का सामान यार मेरे तो पास, हम लोग उसी को promote genuine करते चोरी हैं। का सामान मेरे पास मिलता है। यार कभी कभार तो ये भी होता है कि कस्टमर की गाड़ी का ही सामान वापस मिल जाता है, लेकिन मसला ये है कि एक चीज चोरी हुई भी है और एक चीज आपको वापस खरीदनी है एंड यू नीड एट अ चीपर कॉस्ट। सो फॉर एग्जांपल मेरे तो आप काबुली ले चोरी हुआ था, आप काबुली ले लें, शेरशाह से ले मैं आपको लें, रीजन बताता हूँ, पिंडी मार्केट से मंगवा लें। सेम रेट होता है। सो आप काबुली जो आप बोल रहे हो वो काबुली पैनल कहाँ से निकल के आता है? Scrap, bulk scrap a lot of times. मैं आपको ये कहूँ Some obviously चोरी भी होगा of तो course. वही आप काबुली के वेंडर्स का समझ लें, लेकिन अब ये जो वेंडर है वही फिक्स भी करता है यही पार्ट। ऐसे साइड मिरर्स के वेंडर्स होते हैं वो भी वही जाके फिक्स करते हैं। अब आप उसको आप ये बोल रहे हैं कि वो चोरी का सामान है और उन्होंने स्क्रैप से निकाला है, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग, सही है। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ मिल रही है तो इसमें एंड यूजर को ऑनबोर्ड करना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज मार्केटिंग एफर्ट, क्योंकि इट्स टेकन दिस लॉन्ग फॉर अस एंड आई एम अ कार गाय, यू नो दैट, टू गेट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू गाइस डू. Trying to explain this to the end customer who has already no idea कि यार गाड़ी बनती कैसी है, मुझे मैकेनिक से जान छुड़ाओ प्लीज. How do you communicate this in a very simple manner?
So for the end user, it is just OkCar that is getting their issue resolved. For the end user, there is no other person that they are communicating with basically. उनके पास एक ऐप है या एक हमारा सपोर्ट का नेटवर्क है जिस पर वो कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू या यानी चैनल के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट एंड टेल अस दैट ये काम है मुझे करवाना है, या एक बेसिक सी ऐप है विच इज़ अगेन जहाँ पे वो अपनी गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन डालकर एंड देन एक्चुअली उसके फॉलोअप्स भी ले सकते हैं उसी गाड़ी के ऊपर, उसी ऐप के ऊपर. And for them, that is just what they're expected to do. They will get a quotation over there only. They need to like let us know that they're okay with it. नहीं है उनको renegotiate करवाना है. That opportunity is also there. And once that is done, they hand over the car to the technician जो उनकी doorstep पे आके उनसे चाबी ले लेता है उस गाड़ी की. But it's not your technician. It is not our technician. It's one of those 7 or 8 enrolled, Exactly. and you're going to scale that. Yes, Yeah. yes. But that person is following all of the SOPs जो हमने उसको inform किए हुए. He's using the application जो उसकी technician application है जो OkCar ने उसको provide की हुई है, जिसमें he has to ensure कि वो गाड़ी का काम शुरू करने से पहले उस गाड़ी की पूरी एक कंडीशन की रिकॉर्डिंग करे, चाहे पिक्चर के फॉर्मेट में चाहे वीडियो के फॉर्मेट में, उसके स्पीडोमीटर की, उसके जो फ्यूल का लेवल्स है उसको गेज, उसकी पिक्चर्स रिकॉर्ड करें एंड देन ही स्टार्ट्स हिज वर्क, which is again a little time consuming for the technician, but उसको ये पता है कि eventually उसके काम में कोई नुक्स बाद में नहीं आ सकता क्योंकि जो कंडीशन है उसने वो आइडेंटिफाई करके आपको पहले बता दी. Yeah, Right. pure very simple example would be अगर आप कभी भी खान किसी क्लिनिक पे जाते हो तो जब आप क्लिनिक पे जाते हो वो पहले एक असिस्टेंट आता है जो कि पूरी आपकी हिस्ट्री लेता है, सही, और हिस्ट्री लेने के बाद फिर वो आपको डॉक्टर के पास भी मिलता है कि यार ये है, सही है, और उनको ये इश्यूज आ रहे हैं. Basically अब आप बताएंगे सर कि क्या हो सकता तो है. आप स्क्रीन कर रहे हैं और फिर आप डॉक्टर को टेक्निकली घर भेज रहे हैं उनके Yeah. कि ये इसको रिपेयर कर दें. Yeah. तो अगर मैं ये पूछूं कि आप अपने सर्विस को एक जुमले में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे कस्टमर्स को, व्हाट वुड यू से? So we are a B2C platform for customers to get their car repair and maintenance done. It's a simple as in हम लोग एक ऑनलाइन वर्कशॉप है for customers. On the Right. back end, how we do it That's is a- it's not the customer this is- information is not necessary for the customer. हम लोग And- वो फिर वर्कशॉप्स को इनेबल कर रहे हैं, वर्कशॉप्स के लिए ERP इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं और सारे काम सिस्टम दे रहे हैं. और जो काम करने वाले हैं अक्सर यूल हियर कि घर पे ऑयल चेंजेस की एक और कंपनी भी है दैट डज ऑयल चेंजेस Yeah, एट yeah. होम. There are quite a few. What is the size of the work you can get done at home? So we do preventive services and diagnosis at customers' doorstep and even car spa services जिसके अंदर डिटेलिंग वगैरह आ जाती है. But we don't perform suspension overhauls or engine overhauls at customers' doorstep. There are 2-3 reasons for it. And I understand obviously the space is probably a Yeah. big challenge. Tools The का parts challenge and the आता है. tools, right. वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपको इंजन जब निकालना होता है बिल्कुल तो सही आपको है. उसके लिए अलग से एक टूल चाहिए होता है जो कि चेन से आपका इंजन निकलता है. तो ये बहुत सारी चीज़ होती हैं जो कि वर्कशॉप पे अवेलेबल होती हैं. प्लस इवन एट द वर्कशॉप यू गेट मोर मैकेनिक्स टू सी एट दोज पार्ट एज वेल. सो आपको भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार कि अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज़ बात कर रहा हूँ सही, तो वो मुझे दूसरा मैकेनिक भी मुझे उसी वक्त सपोर्ट कर सकता है. तो ये अगर हेल्पिंग हैंड ज़्यादा होता है. और अगर ये डायग्नोज कर दिया कि गाड़ी पे आके उन्होंने देखा कि इस पे तो बहुत ज़्यादा काम है, डू यू हैव अ प्लेस कि वो गाड़ी जाके फिर वो पूरा काम Yeah. So what happens is that for example आप मुझे कल कॉल करते हैं, आप बोलते हैं यार नाशिद मेरी गाड़ी से टक टक आवाज़ आ रही है जब मैं राइट की तरफ मोड़ रहा हूँ गाड़ी. I'll ask you to book a diagnosis with me. हमारा टेक्नीशियन आएगा, टेक्नीशियन आपके पास डायग्नोस करेगा, आपको एक डायग्नोसिस की रिपोर्ट मिलेगी, उसके साथ आपको अगले 6 घंटे के अंदर अंदर एक कोटेशन मिलेगी कि सर ये पॉसिबिलिटी है, आप मुझे ये बता दें कि आपका बजट कितना है, ताकि मैं आपके बजट के हिसाब से वो पार्ट्स जो हैं वो वाली क्वालिटी के मैं आपको ऑफर कर दूँ. कस्टमर वो वाली चीज़ करने के बाद कोटेशन आती है. वंस द कस्टमर अप्रूव्स द कोटेशन तो जो डायग्नोसिस के चार्जेस होते हैं वो भी डिस्काउंट हो जाते हैं उस इनवॉइस के अंदर. प्लस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री वैले फॉर द कार पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ टू द कस्टमर, and even that is completely insured from point A to point B. और वो गाड़ी की जो रिपेयर है will be at one of those 7 places. Yes. ठीक है. जिसने डायग्नोस करा होगा वही वर्कशॉप वाला बंदा लेकर आएगा, वरना फिर वही ना कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाती है कि यार किसने तो ये कहा था तो Right, ये इसने कहा था तो ये, वो चाइनीज विस्पर वाला बहुत बड़ा एलिमेंट आया था. So that workshop will send that mechanic to you to pick up the car. They will give you an assurance note कि यार आपकी गाड़ी मैं पिक कर रहा हूँ and it's completely under insurance until I give it back to you. वो गाड़ी जाती है, गाड़ी पे काम होता है, गाड़ी की QC होती है. वर्कशॉप पे हमारा एक अपना पर्सनल भी बैठा होता है जो कि कस्टमर्स की कोटेशंस के ऊपर ये काम कर रहा होता है, प्लस ERP पे काम कर रहा होता है, प्लस वो QC के भी चेक्स एंड बैलेंसेस रखता है. ये जो काम है सारा, this sounds that you're targeting a slightly more educated end user. नो हम तो कह रहे हैं कि जिसको गाड़ी की बिल्कुल नॉलेज ना हो.
मतलब लेकिन एक सर्टन लेवल ऑफ एजुकेशन है Yeah. मतलब मैं I'm not talking about car education और अपना टेक्निकल एजुकेशन, एक सर्टन बेसलाइन एजुकेशन हो कि यार उनको पता हो कि ऐसा ऐप है और ये घर पे आ सकते हैं और कर सकते हैं. मतलब I don't see let's say necessarily a person sitting in a gaon somewhere with his old 78 Corolla being able to use this. Yeah. This is a Karachi, Lahore, Islamabad, Multan, Faisalabad type Yep, city yep. focused Well, problem, yes. right? How big is the actual target market for this to be able to scale it? Yes, so out of the 7.5 million cars, almost 6.2 million cars are in the metropolitan cities. Okay. So that's a whole market. हाँ, उसके अंदर से अगर मैं हम लोग नॉर्मली इसको 20% डिस्काउंट करते हैं फॉर द कार्स दैट आर स्टिल अंडर वारंटी, क्योंकि 3 years डीलरशिप जो है वो अगर आप उसका ऑयल चेंज भी कहीं और से करवा रहे हो तो वारंटी वॉइड करते हैं. And of this, let's say it's 5 million, simplified, right? 5 million में से how many do you think you can get on a monthly basis? Yes, so why can't we, as in अगर आप इसका एस्टिमेट पूछ रहे हो कि कितने मंथली बेसिस पे, तो हम लोगों ने जो अपनी प्रोजेक्शंस वगैरह के हिसाब से रखा हुआ है, that is that we can capture up to around 10 to 11% of the market. Let's say you capture 10%, which is 500,000 vehicles. You're not doing 500,000 every month, right? That's over a year. It's a it's That's going to be a over quarter, every 4 months. 4 months. So you'll rotate 500,000 यानी vehicles. 125,000 per month. 125. So you'll rotate 500,000 in a year. Yeah. और उसकी जो वैल्यू है सही ऑन एन एवरेज, क्योंकि अब ये एवरेज जो है हम लोग $400 का इसलिए कोट करते हैं. द रीज़न इज कि फॉर अ 5 to 7 year span, customer also changes the tire, customer also gets engine overhaul, customer also gets suspension work done, customers के multiple times brakes But average change होते हैं, तो $400 की एक वैल्यू निकलती है. दैट इज रफली अराउंड Annual. लाख रुपए ऑन एन एनुअल बेसिस. over a what year period? ओवर 5 years एक कस्टमर 5 लाख रुपए अपनी गाड़ी पे खर्च करता है. So your lifetime value of your customer over a 5-year period is $400. Yeah. लेकिन No. $2,000 for a 5-year period. For a 5-year, it's $400 a year is what Yes, you're saying. yeah. ठीक है. So it's $2,000 over a 5 year. So it's $400 a year for 500,000 customers, Yeah. right? Okay, so you're looking at what? Roughly a $200 million a year business. Yeah. Interesting. Plus आप इसको It's optimistic, don't you So, think? Because yeah, look, I'll flip it. I'll tell you. I'll flip the reason I'll say, and then you can answer it. The reason I say, in my very small hobby of a workshop, the average ticket size, let's say for a standard job, standard brakes, repair, maintenance, oil, whatever, parts and labor milake, let's say is between 10 and 15,000 rupees. Let's say I'm talking about, let's say it's a Corolla and above type vehicle. Let's say the average job is 15,000 rupees, right? If there's 15,000 rupees ka job hai, you're saying there's 500,000 cars, right? If you do the math, right, 15,000 works out to $50. Yeah. $50 times 500,000 works out to roughly $25 million a year. Yeah. $25 million is the market potential of this, of which 70% is parts cost, Yeah. right? So let's say $20 तो parts में चले गए. ठीक है, वो 5 जो डॉलर हैं जो आप 5 लाख लोगों पे लगाएंगे वो आपके पास जेब में आ रहे हैं. Not really. Not really. So I'll tell you why. To me, so what I'm trying to say is, to me, it doesn't seem like something that has a huge market potential, like, let's say, most businesses that everyone wants to chase after a startup problem that they say is, yeah, this is a unicorn business, this is a $1 billion business, whatever. So we are positioning. देखें, right now at the stage that we are in, we are a B2C platform that repairs and maintains cars. Right. लेकिन इसी के अंदर हम लोग AAA सर्विस भी लॉन्च करेंगे, हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लॉन्च करेंगे, हम लोग कार रीसेलिंग का प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे, हम लोग कस्टमर की स्टिकनेस वहाँ से उस तरीके से बढ़ाएंगे. वी ऑलरेडी हैव अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ऑन बोर्ड जिनके साथ हम लोग OBD2 की पोर्ट की चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, सही, जो कि हम लोग कस्टमर की गाड़ी के अंदर, एंड इट विल एक्ट लाइक अ फिटबिट फॉर अ व्हीकल, सही. तो देयर आर मल्टीपल वर्टिकल्स दैट वी आर वर्किंग ऑन. इट्स नॉट ओनली रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड द अदर साइड ऑफ इट इज के आर. So for those who don't know what an OBD2 is, can you tell them? So OBD2 ये है कि यार जो आप लोग नॉर्मली एक वर्कशॉप पे जाते हैं और आपको 1,000 रुपए का डायरेक्ट बोला जाता है कि ये स्कैनर लगाने के सर 1,000 रुपए लेंगे. इट्स अ स्मॉल डिवाइस 16 पिन कनेक्टर दैट कनेक्ट्स विद द OBD connector in under your steering. So it's an onboard diagnostics with the ECU, और जो ECU के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है आपकी थ्रॉटल बॉडी की, आपके इंजन की मिस फायरिंग की, या अगर आपकी गाड़ी में जो भी सेंसर्स लगे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पुल इन करके वो आपको
तो वो scanner पे दिखा देता है। गाड़ी की डायग्नोस्टिक डेटा आपको दे देता है. Electrical diagnostic data, not ठीक the है. mechanical diagnostic And data. so your strategic partner is going to help you how using this diagnostic So, data. कंसिडर इट दिस वे कि यार अगर फिटबिट के अंदर मैं आपको अगर डॉक्टर्स भी इंटीग्रेट कर दूं और अगर आपकी हार्ट बीट जा रही है नीचे, आपके डायबिटिक का वहाँ से काउंट आ रहा है और वो डायरेक्टली डॉक्टर को बता रहा है कि ये हिस्ट्री चल रही है, तो आपकी शायद लाइफ स्पैन बढ़ जाए. तो गाड़ी की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए, या गाड़ी की लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को वो बताने के लिए कि यार कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन हम आपको दिखा सकते हैं इन अ बेटर वे. वी आर नॉट गोइंग टू से कि यार आपकी बैटरी की रीडिंग ये आ रही है. हम आपको बताएंगे गाड़ी की बैटरी की रीडिंग अच्छी आ रही है या बुरी आ रही है. सही, जो कि आपको समझ आ सके. ठीक है. तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से कस्टमर की स्टिकीनेस बढ़ती है कि अगर मेरी गाड़ी के अंदर ऑलरेडी एक चीज लगी हुई है, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मेरे पास उसकी हेल्थ पूरी सिंक्रोनाइज हो जाती है. वही मुझे बताया था कि आपका ऑयल चेंज 1000 किलोमीटर में ड्यू है, वहीं से आप एक बटन दबाएं और आपका ऑर्डर बुक हो जाए और घर पे आके काम हो जाए. तो हम लोग इस सोल्यूशन को लेके चलना चाह रहे हैं. तो इसमें जो मेरा, दिस इज अ कंज्यूमर सोल्यूशन, बट आवर मेजर फोकस राइट नाउ इज, जैसे आपने कहा कि आपने ऑस्ट्रेलिया से एक टूल लिया हुआ है ERP, $70 to $80 का कॉस्ट करता है. वो ERP के अंदर भी आपके पास ऑटो पार्ट्स की कोई नॉलेज नहीं होगी, वो सारी आपको फीड इन करनी है. उसके अंदर आपके पास ना गाड़ियों की नॉलेज होगी, वो भी आपको फीड इन करनी थी. उसकी वजह से जो है ना आपकी टीम बहुत ज्यादा एक बैकलैश था कि यार मुझे सब चीजें बार बार करनी पड़ी हैं. और इनिशियली जब हमने भी स्टार्ट करा तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन गूगल शीट्स एंड बाय दैट टाइम वी रीच्ड 5 ऑर्डर्स अ डे. हम लोगों ने बोला भाई ये काम नहीं हो सकता ऐसे, एंड वी नीड टू बिल्ड दैट टेक. जब हम लोगों ने टेक बिल्ड करा उस वक्त मैकेनिक्स हमारे अपने थे, तो वी नो एग्जैक्टली कि व्हाट गोज रॉन्ग. जैसे फॉर एग्जांपल आप पूछोगे यार स्पीडोमीटर की तस्वीर क्यों लेते हो, अब आपके लिए तो होगा स्पीडोमीटर की तस्वीर इसलिए लेते हो ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसका ऑयल चेंज हो सही तो आपको पता हो कि यार कि कितने किलोमीटर पे क्या रेट. हम लोग इसलिए नहीं लेते, हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल की वो भी होती है. कस्टमर हमें अगर कंप्लेन करता है, कल बोलता है आपने पेट्रोल निकाला है, वी कैन शो दैट पिक्चर कि नहीं निकाला, because that is also a problem. Exactly. So हम लोगों ने जो है ना बहुत डीप डाइव करके over the past 2 years we have sit with mechanics, हम लोगों ने काम खुद करें वो वाले, तब हमें पता चला कि क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं और क्या क्या लूप होल्स हैं. एंड ऑब्वियसली वी कांट से कि हम लोग 100% वहां तक पहुंच गए. इट्स अ बिल्डिंग प्रोसेस. हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी पता चल रहा है कि यार के और क्या क्या होशियारियां हो सकती हैं इसके अंदर. सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑल ऑफ दैट. सो फॉर एग्जाम्पल द रिसेंट केस इज कि एज सून एज वी स्टार्टेड टू गिव दैट पुश फॉर ग्रोथ, हमारे सेल्स का जो बंदा है is a call center agent. Most probably drives a motorcycle. He doesn't know about cars. When a customer calls him, how can a customer be converted then? So, जैसे अनुषा बता रही थी स्टार्ट करने के यार, there are information that we have plugged in into the system जो कि डिस्प्ले हो जाती है. So now if you call my call center agent, he'll tell you कि आपकी गाड़ी में सर कौन कौन सा ऑयल रिकमेंडेड है, आपकी गाड़ी में कौन सा गियर ऑयल जाता है, आपकी गाड़ी में कौन सी बैटरी लग सकती है, आपकी गाड़ी के अंदर आपकी गाड़ी DCT है, ATF है, CVT है. वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके. So हम लोग टेक पीस बना रहे हैं and this tech piece can be implemented anywhere across the world. In Africa, in the MENA region, in the Southeast Asia region, there is no ERP service provider or just ERP service provider and they cost you around $80 to $100 a month. Why can't we just build this tech in Pakistan where the unit economics do make sense and the development cost is low and then sell it across the globe? So I have a question. You've given a very good clear picture. मैं उसको recap भी करता हूँ. B2C प्रॉब्लम सॉल्विंग की गाड़ी ठीक करानी है. आई डोंट हैव द टाइम टू डू इट. आई वांट द नॉलेज, आई वांट द ट्रांसपेरेंसी. इट्स ओके अगर मैं थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दूं, बट एटलीस्ट मुझे पता हो कि मैं किस चीज़ पे लगा रहा हूँ, बिकॉज गाड़ियाँ इतनी महंगी हो गई हैं. आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई कार टुडे ताकि वो लंबा चले मेरे साथ, टिल आई कैन अफोर्ड टू रिप्लेस इट. दैट्स द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग. Also the warranty वाला bit. एंड ऑफ कोर्स द वारंटी वाला बिट, राइट? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टुडे यू हैव 7 वर्कशॉप्स enlisted. You're doing Karachi and 5 in Lahore. Karachi and 5 in Lahore, and then you've got, let's say you're doing under 1,000 transactions per month, right? Yep. Now you're building an audience as we speak. To me, why wouldn't Park Wheels, which has been doing what it's been doing, it started off as a blog, online website, which I remember I used to almost 20 years ago, America में बैठ के follow करता होता था कि classic cars की pictures होती थी उस पे. और आज एक ऐप बन गया, पूरा प्लेटफॉर्म बन गया, वो कार्स को भी सर्टिफाई कर रहे हैं, वो रिव्यूज भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं. Why wouldn't the Park Wheels just get into it? Because it already has the customer base and it can easily do what you're doing. They are doing it in Lahore. They have 2 workshops. Exact हमारा वाला मॉडल यूज कर रहे हैं कि 2 वर्कशॉप्स को उन लोगों ने ऑनबोर्ड करा है. लेकिन when you see their prices आप बोलोगे मैं 3 से कम करा लेता हूँ. वो वाला मसला है क्योंकि तो you're saying कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा at a price point that is not that price point. Yes. Also
एट द सेम टाइम पार्क व्हील्स जो है वो स्पेशलाइज करते हैं इन द कंटेंट, सही है, इन द मार्केट कंपेटिटिवनेस, मार्केट की गाड़ियों की नॉलेज और ये सारी चीजें, दे डोंट स्पेशलाइज इन द रिपेयर एंड सर्विस। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक लेकिन फार्मेसी वाला बंदा जो है बट वो उनके अच्छा पास हॉस्पिटल खोल लेगा। बट उनके पास कस्टमर है तो वो तो कुछ भी कर सकते यार हैं। कस्टमर्स किस चीज के लिए, जो गाड़ियां आके देखते हैं, एज इन आपने भी पार्क व्हील्स, जब भी आपको नई गाड़ी चाहिए होती होगी आप पार्क व्हील्स जाके रेट देखते होगे, आपने पार्क व्हील्स से खरीदी कितनी बार है, और अगर आपने खरीदी है तो आपने डायरेक्ट होकर कितनी बार खरीदी है, और आपने पार्क व्हील्स का टूल लेके कितनी बार खरीदी है। एंड क्योंकि देयर इज नो अदर इंस्पेक्शन सर्विस प्रोवाइडर इन पाकिस्तान जो कि नोन हो, तो पीपल जनरली यूज देम। और सर्विस की एक स्पेशलाइजेशन होना, सही है, और मुझे गाड़ियों के बारे में पता होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वही जो मैंने फार्मेसी वाली एग्जांपल दी कि एक फार्मेसी में रन कर रहा हूँ, मुझे सारी दवाइयों का पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, या फिर मैं अगर एक टेस्टिंग सेंटर हूँ तो मुझे सब टेस्ट का पता है कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं अच्छा सर्जन भी होगा या फिर मेरा अच्छा हॉस्पिटल भी होगा। Another strength I feel is कि हमारा जो हमने जो पार्ट्स का डेटा की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक वो नहीं है उनके पास, दैट आई गिव यू, एंड वो एक बहुत मेजर काम था जो हमने ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड बिल्ड किया हुआ है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली उससे क्या क्या चीज़ें ड्राइव कर सकते हैं, द मार्जिन्स आर एग्जैक्टली इन द पार्ट्स वाला पार्ट, जो that is something that we will expand on eventually as well. So सिर्फ सर्विस करने से आपका मार्जिन्स नहीं खुलते। It's funny you talk about parts, data, and aggregating data. I have a funny story related to this, which is a sidebar. So I restore old cars, classic cars, शौक है मुझे. And ढूंढते in Karachi, I stumbled into this one guy in Plaza, जिसके पास he has the largest collection of old new parts. काबुली ओल्ड यानी कि 70s व्हीकल पार्ट्स, ओल्ड व्हीकल पार्ट यानी कि 60s और 70s के न्यू स्टॉक है, और वो आज भी है, बट इंजन पार्ट्स और बॉडी पार्ट्स, pretty much everything you can think of, ठीक है, at scale. मतलब if you want to find a head gasket for a 74 Mercedes, he has it. I rebuilt a American car का पूरा engine, it was a V8. I initially looked at buying all the parts online, और फिर लेके आना, फिर मैंने कहा दिस इज़ टू हैवी और लाना एक प्रॉब्लम होगा, तो ऐसे ही तुक्के में उसके पास चले गए, एंड ही सेड आप 6 दिन बाद आइए। अच्छा, ही डजंट हैव ए व्हाट्सएप और एनीथिंग, लैंडलाइन है, फ़ोन भी नहीं यूज़ करता, तो यू एक्चुअली हैव टू गो 6 दिन बाद। उसके बाद 3 दिन बाद आइए। अब मैंने कहा मैं 6 दिन 3 दिन बाद तो मैं बार बार नहीं जा रहा, तो मैंने ड्राइवर की ड्यूटी लगा दी, मैंने कहा उसके पास जाते रहो। तकरीबन 18 दिन बाद ही कम्स बैक विद अ पर्चा एंड सेज सारे पार्ट्स हैं, 80,000 का बिल है, आप 1 हफ्ते में उठा लो आके। 1 हफ्ते बाद हमने जब सारे पार्ट्स उठाए, आई सॉ द पैकेजिंग, इट वाज बेसिकली ओल्ड न्यू स्टॉक, यानी कि 70s में कभी पार्ट्स आए होंगे, ये बड़े हुए होंगे। अब मैं पहुंच गया इसके बाद, मैंने कहा यार वेयर वाज दिस इज यूर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। आई सेड लेट मी क्रिएट एन इन्वेंट्री फॉर यू। ही सेड मेरे 26 गोडाउन है, पूरे शहर में बिखरे हुए हैं, तो मैं एक एक करके ढूंढते हुए गया, मुझे पता था जहन में कि ये वाला पार्ट इधर वाला है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। मैंने कहा मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, लेट मी क्रिएट अ डेटाबेस फॉर यू। ही सेड नहीं ठीक है, जिस तरह है ठीक है। डेटा अगर एक जगह पे टेबुलेट हो जाएगा ना तो लोग चोरी कर सकते हैं। अब मसला ये है, ये जहन, अगर आप शेरशाह चले जाएं, ये मैं समझा ये इसका प्रॉब्लम है, ये सबका प्रॉब्लम है। नो वन वांट्स टू डॉक्यूमेंट देयर इन्वेंट्री that they have, because then that means you can document the money they make. यार आप ये कह रहे हो लोग अपना बैंक अकाउंट देने को तैयार नहीं कि हम उनको पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, बोलते हैं कैश चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे आप? यार वो इन्वेंट्री हम लोगों ने अपने पास कर लिया ना, और हमें पता है कि किस वेंडर के पास है, सो हमारा अभी बिडिंग मैकेनिज्म बिल्ड तो बेसिकली हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास लिस्ट है लेकिन इन्वेंट्री नहीं है। एग्जैक्टली, मेरे पास रियल टाइम कराची के अंदर ऑलमोस्ट 350 वेंडर्स हैं। But you have, अच्छा, so you're saying list plus inventory दोनों हैं आपके पास? Yep. But then FBR का it's not readily available, लेकिन it can be made available within 6 hours. Right. So we know exactly who to ask for which part. So if I want a piston for a certain type of Honda City, yeah, and I need that piston in Nazimabad, you'll know which vendor can get it to me in the shortest span of time. Yep. Interesting. Switching gears, right? Okay, so we got too technical. I want to know one thing. What is a woman doing in this space?
Because let me get this right. You are LUMS. Yes. Both of you are LUMS. Yep. I'm 13 Right. batch, she's 15 batch. And both of you LUMS graduates, you had a corporate career. You started a startup before, Delivery Chacha, Yeah. and then that got acquired by Careem. Yeah. You worked at Careem. You worked at K Electric. So you both had corporate experience. You come from a family business of car parts, so this makes sense. Yeah. You don't. Yeah, Nor but are you passionate about cars, kind of like the way I am. Yeah, but So how are you here? I was part of a startup prior to OkCar as well. I was part of Find My Adventure, which was Right. a travel startup. And that was something I was absolutely passionate about because But cars can be really boring. So I found the problem very interesting and very relatable. So for me as a female car owner, I have no option of going to a workshop and actually standing there and getting my car repaired. You can come to ours. That is one option, but again, depends on the price point you're offering me, right? And I wouldn't even know about what is going to happen inside my car. Like, so in my team, I've been to almost all of the workshops that we have onboarded. And my team, like the day they found out that I've done this, they were just amazed by that thing happening, because they were like, "Aap gayi kyun wahan pe? Aur aap gayi kaise?" So how did they receive a woman coming into that space? You can, अमूमन औरतें नजर नहीं आती हैं इस space में. बिल्कुल. एक तो आपको उनको ये बात समझाना कि आप जो बात आप कर रहे हैं आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं. So I don't have conversations about the car and the technicalities of it. And that is exactly why I think for me the problem is very interesting, because मैं उसको एक दूर से देख रही होती हूँ, उसको at a scale imagine कर रही होती हूँ. If there is something that I don't know about, I will not want to learn about it, but I would want the system, the technology that we are building, to be smart enough to incorporate that information for any layman to actually have access to it. And I think that is why I am able to solve the problem in a more different way than, let's say, anybody who's more passionate about it. So what happens when a passionate person tries to solve this problem? They get too emotionally attached to the problem. That is that is something that we've experienced in the past. We've had a few people who were very passionate about cars. They loved what they were building. They loved what we were building at OkCar as well. But for them to imagine the problem at scale was where the problem was for them exactly, right? So you need to be not passionate about cars to work on cars. To figure out processes. So you need to be passionate about processes. Exactly. Yeah, so I'll just add into this case. So for example, you are also running your own workshop, right? But imagine this कि अगर मैं आपको कहूँ कि यार कि मैं आपको $1 million दे देता हूँ और आप जो है 100 workshops खोल लो, I am 100% sure you will fail. The reason is क्योंकि you are passionate about it. आप एक एक करके खोलते जाओगे और आप जब तक एक पे दूसरे पे जाओगे, क्योंकि आपको पीछे आप नहीं होगे तो वहाँ पर वो चीजें खराब हो रही होगी. मुझे प्रोसेसेस पसंद नहीं बनेंगे, राइट? क्योंकि आप एक नॉर्मल वर्कशॉप चला रहे हो. एंड आप परफेक्शन चाहोगे जिस चीज में जो आपने बिल्ड किया, बिकॉज अगेन यू आर पैशनेट अबाउट इट. For me, I understand that I will solve for 80% of the problem, not 100% of the problem. जो बंदा आपका एज अ कस्टमर का जो मसला हल कर रहा है वो तो पैशनेट है, क्योंकि वो तो वर्कशॉप वाला ही है और वर्कशॉप का ही मैकेनिक है और वर्कशॉप के ही टेक्नीशियंस आ रहे हैं. लेकिन फॉर अस टू स्केल दिस बिजनेस एंड फॉर अस टू थिंक ऑफ इट ऑन अ लॉन्गर स्केल, हम लोगों को वो प्रोसेसेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है. So it doesn't matter with the problem you're solving, it's the fact that you're solving a problem and you're building processes. That's what excites you. Exactly. क्योंकि this is the only industry left, I think, जिसके अंदर कोई प्रोसेस या कोई डिजिटाइजेशन हुई नहीं है. ये बहुत लिमिटेड हुई है जितनी भी हुई है. एंड फॉर मी आई थिंक अनदर फैक्टर वाज कि मैं इसको फ्रॉम अ कंज्यूमर एंगल बहुत आसानी से इमेजिन कर सकती थी. मुझे नहीं पता था गाड़ियों के बारे में. आई न्यू एग्जैक्टली द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वांटेड एंड एग्जैक्टली द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई कैन एब्जॉर्ब. सेकेंडली आई न्यू कि मेरा सब बहुत बड़ा मसला था कि मैं नहीं जाके एक वर्कशॉप पे टाइम स्पेंड कर सकती थी. मैं नहीं खड़े होकर देख सकती थी कि मेरी गाड़ी में एक्चुअली काम क्या हो रहा है. सो द वे वी डिजाइंड हाउ आवर ऑपरेशंस वर्क इज फॉर समबडी जो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, जो एक वर्कशॉप पे प्रेजेंट नहीं हो सकता एंड वो कंफर्टेबल हो उस आइडिया के साथ. सो फ्रॉम द कंज्यूमर परस्पेक्टिव आई थिंक आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम बेटर. ये मैं इसी बात पे एक और भी चीज़ है, जैसे फॉर हमारा वर्कशॉप ऑपरेटर जो है वो वर्कशॉप पे बैठा होता है. सो व्हेन उसामा कॉल्स जो हमारे ऑपरेशन देख रहा होता है, जब व्हेन ही कॉल्स तो बात टेक्निकल नॉलेज होती है कि सर हम लोगों ने गैसकेट की कोटेशन इसलिए भेजी क्योंकि हम लोगों ने रेडिएटर सर्विस कर दिया था और अभी भी मसला हल नहीं हो रहा. उसका मोस्ट प्रॉब्ली मसला हीटिंग का गैसकेट की वजह से. जब अनुषा कॉल करती है ना और कोई कंप्लेंट होती है तो वो टेक्निकल बात नहीं करते. उनको पता है कि यार मुझे बात वही करनी जो कस्टमर को भी समझ आए.
तो वो एक सॉफ्ट स्किल्स की मैनेजमेंट भी उस तरीके से हो जाती है, साथ में दोनों ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, और वर्कशॉप वाला बंदा भी जो है ना, जब वो उसको पता है ना कि यार अनुषा इज कॉलिंग, सो ही वोंट टॉक लाइक जो एक नॉर्मल कस्टमर है, उसको पता है कि यार वो मुझसे इसलिए कॉल कर रही कि या तो कस्टमर की कोई कंप्लेन है, या तो मैंने कोई प्रोसेस बिल्ड इन करा है जो कि मेरी जिंदगी बेहतर करेगा, एंड या मैंने कोई प्रोसेस था जो फॉलो नहीं किया है जिसकी वजह से ये इशू आया है। और क्योंकि हम लोग उनको ऑर्डर्स दे रहे हैं और उनका घर चल रहा है और वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, तो दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. So it's funny, what you're doing is very similar to what we're doing. Again, my workshop is nowhere near a commercial operation. It was a hobby that's kind of grown into something else. लेकिन जो एक चीज़ मैंने ट्रेन की हुई थी टीम को, मैंने कहा your customer needs to know everything. Yep. So they get a video on WhatsApp of what the problem is, what part is being replaced, what the part options are, exactly like you said, right? And with a description of what's happening, how the part affects the engine and so on and so forth, right? So you have complete transparency at any point in time कि क्या problem है, क्यों problem है, इसको solve किस तरह करेंगे, इसकी cost क्या आएगी, cost options क्या हैं, and how this will be good for you, I guess. Even for us, when you book a bigger order for us, तो हम लोग ने रखा हुआ कि there are periodic maintenance जो कि घर पे होते हैं, उसके लिए हम लोग ग्रुप्स नहीं बनाते व्हाट्सएप पे, लेकिन फॉर एग्जांपल आप मुझे सस्पेंशन का बोलते हो क्या सस्पेंशन का काम करना है, तो आपकी जो डायग्नोसिस की कोटेशन है ना, वो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा विद योर ऑर्डर नंबर इन इट, जिसके अंदर वर्कशॉप का ऑपरेटर, वर्कशॉप का ओनर, मोस्ट वाली अनुषा और उसामा जो हमारा ऑप्स का बंदा होगा, वो कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहा होगा, कस्टमर को कन्विंस कर रहा होगा. हमारी कस्टमर से एक तो वो कंप्लेन आती है ना कि यार रीवर्क्स होते हैं ऑल्दो इट्स अंडर 2% विच इज अ वेरी गुड नंबर, लेकिन रीवर्क्स होते हैं, कंप्लेन्स आती हैं. लेकिन हमें जो सबसे बड़ी कंप्लेन कस्टमर्स आती है ना, वो बोलती है यार तुम लोग बुखार बन जाते हो कॉल कर करके, तुम लोग बहुत कॉल्स करते हो, तुम लोग हर चीज के लिए कॉल करते हो, और हम सामने से ये कहते हैं कि सर 5,000 रुपये का पार्ट है, आप बोलते हो मुझे नहीं लगाना और मैंने लगा दिया, तो 5,000 रुपये कहाँ से लूंगा मैं, मुझे आपसे परमिशन भी चाहिए, और आप मुझे मैसेजेस पे रिप्लाई नहीं करते, सर मुझे आपको कॉल भी करना जरूरी है. तो अब उसके लिए हम लोगों ने टेक के अंदर उसका सोल्यूशन निकाल लिया. हम लोग टेक के अंदर ये सोल्यूशन निकाल लिया कि जो भी आपकी ये ऑर्डर्स के हवाले से कम्युनिकेशन, हम लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, हम लोगों ने एप्लीकेशन के अंदर ही इवन द गुरु दैट इज असाइंड टू योर ऑर्डर, वो भी आपको पता है कि कौन है, आप डायरेक्टली उसके अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो. यू विल आल्सो गेट पिक्चर्स की अपडेट्स वगैरह, जो भी आपकी गाड़ी पे काम हो रहा है आपको वहीं पे सारे अप्रूवल्स देने, वहीं पे आपको सारी चीजें मना करनी है, ताकि यू गेट द हिस्ट्री कि यार ये कम्युनिकेशन हुई थी, यहाँ पर कस्टमर ने हाँ कहा था, यहाँ पर कस्टमर ने मना करा था, देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप इनटू इट. Just to clarify, the guru is our technician. We like to call them our right. gurus. Interesting. I have another question now. Stepping aside from the workshop and the technical discussion, why do a lot of LUMS graduates become entrepreneurs and not as many IBA graduates? Or is this just a perception that I hold, that IBA graduates are more managers, LUMS graduates are more entrepreneurs? This could be a bias. You're going to give me a biased answer. I expect a biased answer, but try not to be biased. This statement is not 100% true. It is true for VC funded startups, Yes. लेकिन not true for entrepreneurial mindset. So I have friends, I have colleagues जो कि VC funded startups नहीं है, अपना धंधा चला रहे, वो भी entrepreneurial ही है. हमारे केस में ये क्या है, अब एक bias हो, for me it was a privilege कि यार मैंने एक startup करा, it was actually acquired and I joined Careem, और करीम से भी एक नेटवर्क ग्रो करा. सो एंड मेरी दुबई के अंदर भी स्टेंट्स हुई, मेरी इजिप्ट में स्टेंट्स हुई, तो आई हैड दैट नेटवर्क ऑफ पीपल एज वेल टू कनेक्ट विद एंड टू अंडरस्टैंड. तो एक नेटवर्क खुल जाता है, तो आप VC फंडेड स्टार्टअप्स स्टार्ट करना इज मोर इजियर देन, क्योंकि आपको पता है कि यार व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फंड रेजिंग, हाउ डू VCs, व्हाट काइंड ऑफ नंबर्स डू VCs वांट कि आपको वो फंड करें, या फिर व्हाट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस डू दे वांट जो कि जिस पे वो पुश करें. तो आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दिस स्टेटमेंट कि यार सारे एंटरप्रेन्योर्स IBA LUMS के निकलते हैं, लेकिन let me rephrase VC funded it. स्टार्टअप्स के अंदर यस, VC funded startups में LUMS के graduates ज्यादातर क्यों हैं? यार क्योंकि मेरे ख्याल से उनका नेटवर्क ज्यादा बड़ा है. नेटवर्क लाइक उस स्पेसिफिक उस सेक्टर के अंदर नेटवर्क बड़ा है. एंड आई थिंक एक और फैक्टर जो मुझे लगता है दिस कुड बी अगेन माय ओन पर्सनल बायस इज the way our programs were structured are slightly different. So my undergrad was in physics. I majored in physics, but I had the opportunity of learning whatever I wanted at LUMS, right? I could take those free electives. I had to take those specific outcourse, क्या कहते थे उनको, जो electives होते थे जो अपने स्कूल से बाहर हमें लेने होते थे. So I had that opportunity to actually learn things that were not related to what I was graduating in. मैंने property law पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस का मेजर हूँ, मैंने अकाउंट्स भी पढ़ी हुई है. So lateral thinking की opportunities ज़्यादा है. Plus there is also another factor I think.
ये मेरे लिए पर्सनल बहुत बड़ा एक है, मुझे नहीं पता लोग अग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन लम्स के अंदर जो है ना, यू आर इन अ sort of a bubble where you don't have distractions from outside. Especially host lights. We were both host lights. We were from Karachi. We were living in Lahore. We didn't have anything in So here it's a fully immersive Exactly. educational experience. So उसमें ना आपके पास जब फारिग टाइम होता है ना, तो either you are talking to people or either you are reading or learning something. There is no कोई और possibility नहीं है. आप खेल कूद रहे हो, that's a time, लेकिन वो भी रात को 11 बजे का बंद हो जाएगा. You are a teenage. 11 बजे आप सोते तो नहीं हो. अगर आप 11 बजे सोते हो तो फिर आप सुबह को 7 बजे फिर पढ़ते भी होंगे. अगर आप 11 बजे सो नहीं रहे, दोस्तों में बैठे हो, दोस्त कम फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स. कोई बंदा जो है वो नॉर्थ से आया हुआ है, कोई बंदा सिंध से आया है, कोई बंदा बलूचिस्तान से आया हुआ है. यू गेट टू मीट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल. तो आपको वो नेशनल नेटवर्क मिल जाता है और माइंडसेट का सही, और आपको समझ आता है कि यार कि शायद मेरे लिए एक मसला बहुत बड़ा हो, लेकिन असल में इतना बड़ा मसला नहीं है. और वो क्वेश्चनिंग माइंडसेट बेहतर हो जाता है. सो आई एंड दिस इज समथिंग आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस एज मैनेजर भी देखा है कि a lot of LUMS graduates tend to ask a lot more questions than people from any other background, and I personally take it very well because वो सवाल पूछने की जो आदत है ना, वो बड़ी ज़रूरी है, एंड वो हर बच्चे में नहीं आती है. हम लोग अब अपनी टीम में बहुत we're actively working on this for people to actually ask questions and smart questions for us to actually start thinking as well, ना, because वरना हम 3-4 लोग एक दूसरे से बात कर उसी सर्कल में घूमते रहते हैं और वो बच्चे भी कोई नई चीज़ सीख कर नहीं जाते. तो हमारे ऑफिस का एक बहुत important part है जहाँ पे वो they have that liberty to come to us and ask questions. Interesting difference. I think that's a very valid point कि being on campus and away from your home city and only doing that thing, क्योंकि यहाँ पे let's say in any other college most people have part-time jobs, घर पे रहते हैं तो वो distractions होती हैं, तो स्कूल में आप सिर्फ पढ़ने जाते हैं, that's about it, and then you disconnect. एक और सवाल मेरा ये था, you had delivery chacha and you sold it to Kareem. Tell me about that experience. What was the transaction? Did you sell it for cash, for equity? Why did you sell it? And how did that help you with this today? Yes, so when I was doing Delivery Chacha, so I consider myself as one of the first batches of entrepreneurs out of Pakistan in the VC funded वाली या फिर ये वाली startups वाली चीज़ों में. क्योंकि मैंने भी कोई उस टाइम पे नई चीज़ नहीं करी थी. बहुत लोगों को पता नहीं है ये, लेकिन लाहौर में there was Roadrunner as well. और मैं जब लॉन्च होता तो मैं उनसे डिलीवरीज करवाता था, लेकिन लोगों को नहीं पता. ऐसे ही हमारे फाइनल ईयर के अंदर देयर वाज अ कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर एक और टीम ने यही आइडिया करा था वन कॉल के नाम से. आई रिमेंबर दैट गाइज नेम बिलाल पटेल, क्योंकि आई टुक हिज परमिशन बिफोर स्टार्टिंग डिलीवरी चाचा. तो जब मैंने डिलीवरी चाचा स्टार्ट करा था ना, तो यार इट वाज अ वेरी बेसिक इशू फॉर मी कि यार मैं अपने अगर चौकीदार को भी भेजता हूँ, प्रिविलेज बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अगर मैं चौकीदार को भी भेजता हूँ, चौकीदार को भी मुझे 10 बार समझाना पड़ता है कि लाना क्या है. और कोई डिलीवरी सिस्टम है नहीं यहाँ पे जो कि ऑन डिमांड डिलीवरीज कर रहे हो. और उस वक्त ऊबर वाज आल्सो ग्रोइंग, ऊबर स्टार्टेड एज वेल, और ऊबर भी ग्रो कर रहा था. तो मैंने यही चीज लॉजिस्टिक्स के साथ करने की कोशिश करी थी. और मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के पास अपने राइडर्स नहीं है. तो दैट वाज व्हेन इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड. आवर बिगेस्ट ब्रेक वाज E2 एंड फूड पांडा. वी वर डूइंग अराउंड 2500 ऑर्डर्स पर डे. ये ऑर्डर्स पर डे का नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देन आई टेल यू कि हाउ इट चेंज्ड एट करीम. इसके बाद 2016 के अंदर Baikia also came. By 2016 के एंड पे Baikia also came, Kareem also came. They were well funded startups. पैसा था, as in अगर मैं उस वक्त डिलीवरी चाचा की एक्विजिशन नहीं आती तो आई हैड ऑफर्स फ्रॉम बोथ Baikia एंड Kareem. Baikia में ये था कि एक पाकिस्तानी स्टार्टअप को बिल्ड करना था, Kareem में था कि ऑलरेडी एक स्टार्टअप बिल्ड हुआ था, सही है, उसको ग्रो करना था. मैंने बोला मैं स्टार्टअप बिल्ड करने वाला तो उसको देख चुका हूँ डिलीवरी चाचा के थ्रू, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू रेज फंड्स और हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप. तो मेरे लिए उस वक्त Kareem वाज अ बेटर ऑप्शन फॉर मी. Kareem की जो सेलिंग वैल्यू थी, it was good cash, but it wasn't too much of a cash, but it was a promise in terms of options as well. तो माशाल्लाह it all turned out very well, made lots of money. अब मेरे ख्याल से एक हफ्ते पहले भी लास्ट ट्रांजेक्शन आई उनकी और अब क्लोज हुआ है. तो वो वाली जब मैं एक्विजिशन करके Kareem में गया, सो Kareem के अंदर आई रिमेंबर मुझे पहला डे एट माई जॉब वाज GM समिट इन दुबई, ऑल्दो आई वाज हायर्ड फॉर पाकिस्तान. जब मैंने वहाँ पर देखा ना नंबर्स किए हैं, तो मैं उससे ही हो गया था कि यार एक स्टेप पीछे हो गया था कि यार ये तो दुनिया ही अलग है. कि आप बोल रहे हो कि यार कि मैं 25 ऑर्डर्स कर रहा था और मैं बहुत खुश था, और ये हो यहाँ पर तो दिन की 25,000 कैंसिलेशन है. जब मैंने बाइक लॉन्च करा, बाइक लॉन्च करने के पहले दिन देयर वर 1300 कैंसिलेशंस. द नंबर ऑफ बुकिंग्स वर मोर देन 3500.
मैं ये बताने का मकसद ये कि the scope changed from day one of the job. जब And मैंने so, shift करा. and so did your role, because बेच के, you being an entrepreneur and running your own business, you Yeah, switched Kareem over was a very and you became an employee. नहीं यार, करीम में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यार कि जो मेरे साथ मेरे कलीग भी थे, हैदर रजा, ही इज आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर्स एट डीलकार्ट एज वेल नाउ. कभी वो वाला डिस्टिंक्शन नहीं था कि यार कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है. इवन विद जुनेद और इवन विद तला भाई डायरेक्ट बातचीत थी, मैसेजेस पे नॉर्मल बात होती थी. कोई भी आपको सवाल हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट रिस्पॉन्सेज मिलते थे. देयर वाजंट एनी चेन ऑफ कमांड. और हाँ, रिपोर्टिंग लाइंस थी सही, लेकिन उसमें एजिलिटी वाज मोर प्रेफर्ड ओवर ब्यूरोक्रेसी ओवर देयर. है ना. तो आपको कोई भी चीज करनी है ना, तो आपको बस पूछना है और कर देना है. शायद कभी कभार पूछना भी नहीं है, क्योंकि जुनेद के मुझे ये वर्ड याद है कि अगर मैंने आपको हायर किया है तो देयर इज अ रीजन फॉर इट एंड वी बिलीव इन यू, सो डू इट. तो वो वाली अप्रोच थी. इसके लिए कभी वाला कभी ब्लॉकर ही नहीं आया. ऐसा भी हुआ है कि हमारा लॉन्च है पेशावर के अंदर, थर्सडे तक सप्लाई हुई नहीं है, फ्राइडे को लॉन्च है. मैं थर्सडे की सुबह फ्लाइट करा के बगैर किसी से पूछे मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पर सप्लाई एक्वायर करने में हेल्प करी, ये सप्लाई एक्वायर की और फ्राइडे को लॉन्च करके वापस कराची आ गया. तला भाई डिडंट इवन आस्क मी कि कहाँ था भाई तो. Interesting. तो वो बहुत डिफरेंट कल्चर था वहाँ पे उस सेंस में. So if you were to give advice to someone starting their own business, whether it's VC funded, whether it's their own business, लेकिन वो खुद से शुरू कर रहे हैं, Yeah. what is the one piece of advice you would give? Both of you. I'm going to ask you both. Yeah, so from my side it would be कि if you are going in with full heart, and do not be disappointed with a failure, because when you fail then you get back again. जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले दिन से नहीं चलता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर चलना शुरू होता है, फिर भागना शुरू होता है. And that is how life is, and that is also entrepreneurial journey के अंदर भी there would be setbacks. 100 में से 3 successful होते हैं, and there is no issue if you get a setback in this. Just march on. What about you? I think patience is something that I've learned in my journey, both in my previous VC funded startups are anything but patient though. No, but in terms of whatever you're trying, you still have to be patient about that not working out, and then you need to get back up and start again, right? So वो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा नहीं हो रहा तो wrap up and thank you. ये नहीं हो सकता. आपको दूसरी चीज़ दोबारा ट्राई करनी है और उसके लिए आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ता है. Perseverance is the second word, I think. And also macroeconomic conditions अब ऐसे हो गए कि VCs are not only looking for growth, they are looking for sustainable growth, which is your economics positive होने चाहिए, transaction losses नहीं होने चाहिए. Do you, at this point, and this is my last question, are you going to bet on Pakistan over the next 5 years? Not over the next 5 years, लेकिन अगर आप थोड़ा time spend उसको 10 साल कर दोगे तो yes. So it's no for 5 and yes for 10. Yeah, no for 5. The reason is कि even the world is going through a global crunch right now, और उसको भी स्टेबलाइज होने में 1-2 साल लग जाना. और पाकिस्तान जो है जनरली रिएक्टिव है रादर देन प्रोएक्टिव है, तो वो उसको और टाइम लग जाता है. वो 2 साल या 4 साल लग जाते हैं. लेकिन आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन पाकिस्तान. In 10 years. In 10 years, yes. What about you? I think we're aligned on this one. So we have to survive 10 years. Thank you guys so much. Obviously, it's a topic I love talking about, so I particularly enjoyed it. Hopefully, we didn't get too technical. नहीं यार, And कुछ भी नहीं है उसमें भी. If you ever have a car repair problem, just let us know. So please, if you guys have a car repair problem, okay, go to their social assets, check their website out, and you'll be able to solve your problem at the comfort of your home very easily. And you have 2 very talented entrepreneurs here looking to solve a problem that everyone has, especially at a time जहाँ गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं और हमें अपनी गाड़ियाँ और अरसे के लिए अपने साथ रखनी है. Thank you once again, Nasheed and Anusha. Thank you for coming in, and thank you all for tuning in. Please subscribe and like if you like the content. There's more coming in next week. Some really interesting conversations coming up. Stay tuned for more. Thank you once again. Bye-bye.